In the procedure, we need to remove the diseased native liver. To do so, we divide the blood supply and the bile duct. We first divide the right and left branch of the hepatic artery. The common hepatic and cystic ducts are divided. The portal vein is divided. A clamp is applied to the inferior vena cava, or IVC, below the liver. Another clamp is applied to the IVC above the liver. The hepatic veins are divided. The IVC is divided. The IVC is divided below the liver. The diseased liver is removed. In preparation for the vascularization of the to-be transplanted liver, the openings of the hepatic veins and the vena cava are made into a common channel. This maximizes the outflow of the to-be transplanted liver blood flow. We also create a common opening for the hepatic artery. A whole organ transplant is when the entire liver from a deceased donor is used for transplantation. We begin by connecting the top of the donor IVC to the patient's IVC. Then the IVC below the liver is connected to the patient's IVC. Next, the portal vein is connected, the clamps are removed, and blood flow in and out of the liver is restored. The hepatic artery is connected. Lastly, we connect the bile duct. It is common to be in the hospital for several weeks after the operation. मेरा नाम यहया गनी है और मैं इंजीनियर इरफान गनी साहब जो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए उनका लड़का हूँ। मैं काफ़ी दिनों से लीवर के मर्ज़ में मुब्तला था और बहुत परेशान था मैं, और डॉक्टरों ने भी, जो अनजान डॉक्टर थे, ना तजर्बाकार थे, उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि लीवर का इलाज नहीं है और इसमें बहुत जल्दी आदमी लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी खो देता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं कई जगह गया, इसकी वजह से हैदराबाद भी गया, चेन्नई गया, दिल्ली में कई हॉस्पिटल गया। फिर मैंने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे के बाद आर्टेमिस के सिलसिले में, पहले से आर्टेमिस के बारे में कुछ साथियों ने मुझे बताया, तो फिर मैं आर्टेमिस में आया, यहाँ डॉक्टर से मिला। डॉक्टर बहुत अच्छे, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ। और बहुत बड़ी चीज़ ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरे साथ इन हज़रात का सलूक रहा, वो एक फैमिली मेम्बर नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खुदा की तरफ से ये लोग एक फ़रिश्ते बन कर के आए और इन्होंने मेरा जैसा देख रेख किया, जिस तरीक़े से मेरे साथ बर्ताव किया, बहुत ही अच्छा बर्ताव है। और इसमें ट्रांसप्लांट के अंदर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो डोनर होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती है। डोनर के लिए भी बहुत ही राहत की चीज़ है कि वो डोनेट करने के बाद बहुत ही जल्दी उनको आराम की अपनी ज़िंदगी मिल जाती है, जैसे मुझे मेरी भतीजी ने डोनेट किया। और ये बहुत ही आराम से है। मुझे 46-47 दिन आज हो गए ट्रांसप्लांट के, और ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हालांकि इसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और शादी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए जो लोग भी इसमें डोनेट करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के अंदर, वो डोनेट करने के लिए कोई हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, कोई भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। और डॉक्टर भी मुझे बहुत अच्छे मिले। मैं तो फैमिली का मेंबर समझता हूँ, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं इस आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक मेंबर हूँ मैं, और जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, इतना अच्छा सलूक किया। आप लोग बेफिक्र होकर के आर्टेमिस में आएँ और आकर के अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। और ये हमारी भतीजी है, कुछ बोलेगी। मेरा नाम आयशा है
और ये मेरे अंकल हैं। तो मैंने उनको अपना लीवर जो है वो डोनेट किया है और मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन के टाइम में भी नहीं थी, ऑपरेशन के बाद भी नहीं है और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो भी लोग अपना लीवर डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने फैमिली में, तो वो ईज़िली दे सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी होती है तो डॉक्टर जो है, यहाँ की जो पूरी टीम है वो बहुत सपोर्टिव है। हर वक्त आप, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे और हॉस्पिटल होता है कि नहीं हम बिज़ी हैं, हम अभी नहीं देखेंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो आप आराम से दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो इतना बीमार था कि मेरा लीवर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी परेशान थे, हैरान थे कि इतना ज़्यादा लीवर ख़राब हो चुका है, कैसे होगा। लेकिन खैर अल्लाह ने बड़ी सुनी और असल तो अल्लाह ताला करने वाला है। और इस डॉक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने ऊपर नहीं लेते हैं। कहते हैं कि भाई मैं काम करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ऑपरेशन करूँगा और सेहत देने वाला अल्लाह है, सेहत अल्लाह ही देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I am consultant liver transplant and GI surgical sciences at Artemis Hospital, Gurgaon. So today we are going to speak on hepatitis, which basically is infection of the liver, which is mostly caused by viruses, is known as hepatitis. Now, hepatitis can broadly be divided into acute and chronic. So what do you mean by acute? The acute infections caused by viruses are self-limiting and they do not lead to any long-term problems for your liver. The chronic hepatitis, on the other hand, are caused by those viruses who tend to remain in your body for a very long time. Now, first talking about acute hepatitis, I guess most of the people know that there is a virus which is known as hepatitis A and there is a virus which is known as hepatitis E. Now, these two viruses, you acquire them by intake of contaminated food or drinking infected water. So what it does basically, once you have this kind of an infection which is caused by hepatitis A or E, you have symptoms which are common to any other virus illness of the body. Like after a period of 10 to 15 days, you can experience low-grade fever, loss of appetite, body ache, malaise, and what follows after 4 to 5 days is that you may experience jaundice, which is yellowness of skin and sclera, as well as passage of yellow-colored urine. So what happens at this stage, most of the people consult their doctor, and after doing basic blood tests like liver function test and the virus test, you come to know that a particular person is suffering from hepatitis A or hepatitis E virus. Fortunately, most of these infective episodes are self-limited and does not require any specific treatment except bed rest, adequate hydration, and maintaining good nutrition. And nonetheless, in less than 1% cases, especially with type E virus, it may lead to acute liver failure, which can have disastrous consequences. So what we recommend, even if the illness is mild, you have to follow the instructions of your doctor, get yourself tested, and though most of the patient will recover on its own, but still consulting the doctor till the infection is over is an approach which should be adopted by everyone.